Hello everyone. Welcome to our video series uh, where we are discussing about the previous year gate questions on the subject engineering hydrology, and the topic that we are discussing is runoff and hydrographs. Today is the part 9 of the video series on runoff and hydrographs. So the first question that we'll see is there is a hydrograph that is given. Okay, and the duration of the storm is 140 minutes. So a hydrograph is given, as you can see, and infiltration capacity is given. So at t is equal to 0, infiltration is 17 centimeter, 17 mm. Then it gradually decreases to 10 mm per hour. Then it further decreases to 4 mm per hour, and then it flattens out like this. So what is the question? The question is we have to calculate the infiltration index, phi index. So this is a very interesting question. I think this is a new type of question that we are seeing. So how we are going to solve it? See, the infiltration capacity is given, rainfall intensity is given. Calculate क्या करना है? Phi index. What is phi index? Phi index is, as we know, कि ये एक इमेजिनरी लाइन है, राइट? सो सपोज इफ दिस इज द फाई इंडेक्स, तो इसके नीचे द एंटायर पोर्शन विल बी इन्फिल्ट्रेशन. इस लाइन के नीचे द एंटायर थिंग विल बी इन्फिल्ट्रेशन. इस लाइन के ऊपर द एंटायर रेनफॉल विल बी कन्वर्टेड टू रन ऑफ. तो फाई इंडेक्स के नीचे द एंटायर रेनफॉल विल कन्वर्ट इनटू इन्फिल्ट्रेशन, and इसके ऊपर entire rainfall will be converted to runoff, and the formula is P minus R divided by TE, that is the effective time. What is effective time? Effective time means the duration, जितने duration में runoff is taking place, right? So P is the precipitation or effective rain. P is the effective rainfall. Sorry, P is the precipitation, R is the runoff, and TE is the ड्यूरेशन ऑफ रन ऑफ. नाउ अगर हम इस फिगर को देखते हैं, सो सी टिल दिस, टिल 40 मिनट्स, राइट? टिल 40 मिनट्स क्या है? इन्फिल्ट्रेशन इज मोर देन प्रेसिपिटेशन. दैट मीन्स इस पीरियड में देयर विल बी नो रन ऑफ. देयर विल बी नो रन ऑफ हियर. दैट मीन्स आई कैन फाई इंडेक्स कैलकुलेशन में ये तो आएगा ही नहीं. फर्स्ट 40 मिनट्स आएगा ही नहीं, बिकॉज टी इज द इफेक्टिव runoff effect. Sorry, TE is the duration of runoff. जितना टाइम runoff हो रहा है, first 40 minutes there is no runoff. Similarly, after 100 there is no runoff. This period also there will be no runoff. तो मेरा जो TE है effectively, that is 40 minutes to 100 minutes, right? So during this period, that means 1 hour. So during this period runoff is taking place from the outside. अभी इसमें change हो सकता है, but from the figure at least that much we can see कि 40 minutes to 100 minute runoff is taking place, right? So 1 hour duration. ठीक है. Now for this duration 40 minutes to 100 minutes, what is the precipitation that we have to calculate, and what is the runoff that we have to calculate, right? So what is the precipitation? So 40 minutes tak there is no we don't need to calculate precipitation. We don't need to bother about it. 40 minutes के बाद what is the precipitation? First intensity जो है 15 mm का रेनफॉल होता है. कितना टाइम? 15 mm पर आवर. 15 mm पर आवर का रेनफॉल होता है कितना? 40 to 60 minutes. That means 20 minutes, and we have to convert it into hour. So this is the total rainfall. First 20 minutes. Second 20 minutes 60 to 80 minutes. इसमें कितना रेनफॉल होता है? 10
multiplied by again 20 divided by 60. Next, third one, 8 multiplied by 20 divided by 60, right? So if you add them, it will be your 11 mm. So this is the total amount of precipitation that has occurred between 40 minutes and 100 minutes during this period. तो infiltration कितना हुआ है during this period? So infiltration क्या हुआ है? So this is the infiltration curve. So here is your infiltration. कितना infiltration हुआ है? This much. So from here to, तो इसका जितना एरिया है that is my infiltration. जो green लाइन, सो ग्रीन कलर के लाइन से जो बाउंडेड एरिया है दैट इज योर इन्फिल्ट्रेशन. तो इस ट्रेपिज्म का एरिया क्या होगा? हाफ इनटू, सो दिस इज योर 60 minutes, that means 1 hour, multiplied by, oh sorry, so this will be half into, so this is how much? This is 10 plus this is your 4, right? Multiplied by height, that means 1 hour, which is equal to 7 mm. So this is your infiltration. So if this is infiltration, precipitation is known. What is runoff? Runoff is 11 minus 7, so 4 mm, right? So precipitation is known, runoff is known. What is the value of phi index? So phi is equal to precipitation मेरा है 11 minus 4 divided by time कितना है 1 hour, so that is 7 mm. Phi index का value आ रहा है मेरा 7 mm. But when we started our calculation, देखो we have ये जो part है, that means first जो part है 8 mm, इसको हम लोगों ने we have neglected this, correct? We have neglected this part कि इस we have assumed कि इस region में there is no rain, no runoff, ठीक है? But phi index आ रहा है 7, that means थोड़ा सा there will be some runoff here, है कि नहीं? There will be some runoff at this portion. That means हम लोगों का जो first trial है that is wrong. So you have to go for a second trial. Second trial. Because ये जो region है there is some runoff between 20 to 40 minutes. That means we have to include this part also. तो इसमें अब precipitation क्या होगा? Precipitation will be 11. हम लोगों का जो total था ये precipitation plus we have to add this part. So 8 multiplied by 20 by 60. ठीक है? Minus your runoff. Runoff will not change. So 4 divided by, now what is the time? So पहले था 40 to 100 minutes runoff का, अब ये भी add हो गया है 20 to 40, that means it will be 80 divided by 60 in hour. ठीक है? So this is your phi index. इसका value आता है around 7.25 mm. Okay, so your answer is option number A. ठीक है? तो I hope you have understood this. If you have any question regarding the solution, अगर आपको if there is any query, if you want me to explain it once again, please do comment in the comment box. Or if you are liking the solutions, the way we are presenting it, so please do like our video. Please do subscribe to our channel so that we can come up with more and more videos which will be helpful for you also, और हम लोगों के लिए भी it will reach to a wider number of people, right? So
लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज कि एक इनफ्लो हाइड्रोग्राफ दिया हुआ है. सो दिस इज रिगार्डिंग द एक्चुअली हाइड्रोग्राफ राउटिंग. This is not directly related to runoff, but since it is here, so एक हाइड्रोग्राफ यहाँ पे you have an inflow hydrograph. ठीक है. A inflow hydrograph is routed through a reservoir to produce an outflow hydrograph. ठीक है. तो एक रिजर्वर है, ठीक है, जिसका एक इनफ्लो हाइड्रोग्राफ है और इस इनफ्लो हाइड्रोग्राफ को राउट किया गया है. व्हाट इज राउटिंग? राउटिंग मीन्स टू काइंड ऑफ व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्वर राउटिंग. तो एक इनफ्लो है किसी जगह पे, यू क्रिएट एन रिजर्वर. ठीक है. तो यहाँ पे जो इनफ्लो हाइड्रोग्राफ है, सपोज दिस इज योर इनफ्लो हाइड्रोग्राफ, आई हैव चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ द हाइड्रोग्राफ. हाइड्रोग्राफ का प्रॉपर्टी चेंज मतलब क्या होता है? आई हैव चेंज द फ्लो. अगर एक रिजर्वर मैंने बना दिया तो क्या होगा? इनफ्लो से देयर विल बी सम पोर्शन ऑफ द वाटर विच विल बी स्टोर्ड. तो आउटफ्लो जो मेरा हो रहा है, इनफ्लो से आउटफ्लो विल बी रिड्यूस्ड. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय राउटिंग. कि आपके पास इनफ्लो जितना हो रहा है, यू एट द आउटफ्लो सेक्शन आप यू डू सम काइंड ऑफ इंजीनियरिंग सो दैट इनफ्लो में आपका जितना इनफ्लो फ्लो रेट है, इनफ्लो हाइड्रोग्राफ में जितना आपका फ्लो रेट है, दैट गेट्स ऑल्टर्ड. राइट. सो दैट इज व्हाट इज डन. एक रिजर्वर यूज करके हम लोगों ने एक आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ वी हैव प्रोड्यूस्ड. ठीक है, नो प्रॉब्लम. अब दे आर सेइंग कि द पीक ऑफ इनफ्लो हाइड्रोग्राफ इज P1. सो दिस इज योर P1, PI. ठीक है. एंड टाइम ऑफ ऑकरेंस इज TI. ठीक है. आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ का P इज PO. टाइम ऑफ ऑकरेंस इज TO. अब देखिए, इनफ्लो हाइड्रोग्राफ जितना हो रहा है, इफ देयर इज ए रिजर्वर, क्या होगा? सम अमाउंट ऑफ वाटर विल बी स्टोर्ड, है कि नहीं? तो आउटफ्लो जो होगा, आउटफ्लो का रेट विल बी रिड्यूस्ड बिकॉज इनफ्लो माइनस स्टोरेज इज इक्वल टू आउटफ्लो. तो सम अमाउंट ऑफ वाटर विल बी स्टोर्ड ना, तो आउटफ्लो का जो पीक है दैट विल बी रिड्यूस्ड ऑलवेज. सेकेंड थिंग इज, इफ दिस इज योर इनफ्लो हाइड्रोग्राफ और इफ दिस इज वेयर यू आर मेजरिंग द इनफ्लो, तो आउटफ्लो जब जहां पे यू विल मेजर, उसके बीच में देयर विल बी सम टाइम, नो? क्योंकि जो द वाटर विच इज कमिंग हियर, ये रिजर्वर पे इट विल पास थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड देन इट विल कम टू योर आउटफ्लो. तो ये जो T है, ऑब्वियसली द T विल इंक्रीज. तो PO जो होगा, PO विल ऑलवेज बी लेस देन PI. So PO will always be less than PI. That means PI will always be greater than PO. And TI जो है will always be TO जो है will be always ऑप्शन नंबर C. इनफ्लो का जो पीक है ऑलवेज आउटफ्लो से ज्यादा होगा, और TI जो है इनफ्लो का जो टाइम है दैट विल ऑलवेज बी लेस देन TO. सो ऑप्शन नंबर C. तो ये भी एक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जिसको एड्रेस करने के लिए यू मस्ट हैव अ प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रिजर्वर राउटिंग. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था. 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट दिया हुआ है. ठीक है, 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट दिया हुआ है. ठीक है. एंड दे आर सेइंग कि एक 6 आवर स्टॉर्म हैज ऑकर. देखिए, 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट दिया हुआ है और स्टॉर्म जो हुआ है वो है 6 आवर का. तो फर्स्ट थिंग जो हमें करना है, 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ को वी हैव टू कन्वर्ट इट टू 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, क्योंकि स्टॉर्म जो हुआ है वो 6 घंटे का हुआ है और यूनिट हाइड्रोग्राफ जो है दिया हुआ आपको 2 घंटे का है. राइट. तो 2 घंटे का यूनिट हाइड्रोग्राफ प्लस 2 घंटे का यूनिट हाइड्रोग्राफ प्लस 2 घंटे का यूनिट हाइड्रोग्राफ अगर आप करेंगे तो देन यू विल गेट ए 6 आवर DRH एक्चुअली.
कि 6 घंटे का रेनफॉल होगा तो रन ऑफ कितना होगा। वो आपको कैसे मिलेगा? यू हैव टू ऐड 2 घंटे का यूनिट हाइड्रोग्राफ जो है उसको 2 घंटे से लैग कराइए, देन एंड यू हैव टू लैग इट बाय 2 आवर्स, देन वंस अगेन यू हैव टू लैग इट बाय 2 आवर्स। तीनों को ऐड कीजिए, देन आपको जो ऑर्डिनेट मिलेगा दैट विल बी 6 आवर DRH। उसको अगर 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 घंटे का यूनिट हाइड्रोग्राफ का इफेक्टिव रेनफॉल है 1 सेंटीमीटर, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ मिलेगा, राइट। एंड दे आर सेइंग कि 6 घंटे का रेनफॉल हुआ है, इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी इज 1 सेंटीमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 2 आवर्स, 0 फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स एंड 0.5 सेंटीमीटर पर आवर फॉर लास्ट 2 आवर्स। बेस फ्लो दिया है कांस्टेंट। So the peak flow due to the storm will be, देखिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइप क्वेश्चन है, बहुत क्या कहते हैं, वेरी कॉन्सेप्चुअल। तो कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर होना है, देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। तो मेरा यहाँ पे पहले दिया हुआ है 2 घंटे का यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि 9, 10, 11, 12 तो यहाँ पे तो नहीं होगा, सो वी हैव टू, ओके, सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मैं। ओके, सो 0 आवर में रेनफॉल इज 0, दिस इज 2, 8, 18, 32, 45, 30, 19, 12 और ये है 7। सो लेट्स कीप इट टिल दिस। अगर इफ वी सी कि पीक जो है वो इफ इट इज एक्सीडिंग 9, देन बाद में विल डू इट वंस अगेन। सो व्हाट वी हैव टू डू कि फर्स्ट 0 to 2 आवर्स, फर्स्ट 2 आवर्स रेनफॉल इंटेंसिटी क्या है, 1 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है। सो 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, ओके, इफेक्टिव रेनफॉल इज इतना फॉर फर्स्ट 2 आवर्स। फर्स्ट 2 आवर्स में इंटेंसिटी इज 1 सेंटीमीटर पर आवर। 2 घंटे में इंटेंसिटी क्या है, 2 सेंटीमीटर, है ना। सो फर्स्ट 2 आवर्स में मेरा जो पीक होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 2। सो 0, 4, 16, 36, 64, 90, 60, देन 38, 24, 14। तो फर्स्ट 2 घंटे में जो DRH बनेगा, ठीक है, व्हाट विल बी द ऑर्डिनेट्स, इसका ऑर्डिनेट होगा ये। नाउ लेट अस लैग इट बाय 2 आवर, बट नेक्स्ट 2 आवर्स में एज यू कैन सी, नेक्स्ट 2 आवर्स में रेनफॉल इंटेंसिटी इज 0। दैट मीन्स सब जो होगा इट विल बी 0, क्योंकि रेनफॉल हुआ ही नहीं है इस पीरियड में, सो इट विल बी 0। सो 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ठीक है। लैग इट बाय अनदर 2 आवर, सो इट विल बी ये दिस, सो 0, 1, ये हो गया आपका 2, दिस इज योर 3, 0, 1, 2, 3। सो हियर इट विल बी फर्स्ट। सो यहाँ पे लास्ट 2 आवर्स में रेनफॉल इंटेंसिटी है 0.5 सेंटीमीटर पर आवर, 2 घंटा हुआ है। दैट मीन्स 2 घंटे में योर प्रेसिपिटेशन इज 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर। सो इट विल बी, first it will be 2, right? So you have to lag it by
4 hours. So 0, 1, 2. So 4 May it will be 0, then 2, then this will be 8, then it will be 18, then it will be 32 and 19. ठीक है, तो what is your peak? So the peak is now calculate the Q peak. ठीक है, पीक तो यहाँ पे नहीं होगा ऑब्वियसली, ये दिस इज योर 64, दिस इज योर 92, दिस इज योर 68. ओके, सो योर पीक इज 92 मीटर क्यूब पर सेकेंड. जो डीआरएच आया हमारा 6 आवर स्टॉर्म का, जो डीआरएच आया, डीआरएच का द पीक इज 92 मीटर क्यूब पर सेकेंड. एंड बेस फ्लो आई नो इज द बेस फ्लो इज 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड. सो जो ओके, सो द पीक फ्लो ड्यू टू द स्टॉर्म क्या होगा आपका? पीक फ्लो ड्यू टू द स्टॉर्म विल बी डीआरएच का पीक प्लस बेस फ्लो, दैट मीन्स 97 मीटर क्यूब पर सेकेंड. ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, so I hope you have enjoyed the solution of this question. If you have any query regarding any part, once again please do write in the comment box and we'll try to address your question. Right, so the next question is कि एक ये जो है दिस इज रिगार्डिंग द प्रेसिपिटेशन पार्ट. ठीक है, so what they are saying कि probability that a 50-year flood may not occur at all during 25 year of a project. कि probability क्या है कि एक 50 year flood मतलब 50 साल में एक बार जो आए फ्लड. ठीक है, 50 साल में एक बार जो फ्लड आए. So this is known as time period. So T is equal to 50 years. Probability is equal to 1 by T. That means 1 by 50. ठीक है, not occur at all during 25 years of the project. तो the probability of not occurring, probability of not occurring at all, is what? Is equal to 1 minus P. Right? Is equal to 1 minus P. That is equal to 1 minus 1 by 50. So probability of occurring is 1 by 50. So if probability is occurring is 1 by 50, then probability of not occurring is 1 minus 1 by 50. क्योंकि total probability is 1 है ना. So this is 49 by 50. अब क्या बोला है कि 25 years में. So probability of not occurring in 25 years is q to the power 25. So 49 divided by 50 to the power 25. ठीक है, if you do this the value will be around 0.60. Okay, so so let's go to the next question. जो पूछा गया था in the year of 2020. एक triangular DRH is given. See, this is a standard question. इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सॉल्व किए हैं ऑलरेडी. A triangular DRH is given. ठीक है, टाइम बेस दिया हुआ है, टाइम बेस इज 90 आवर्स. ठीक है, टाइम बेस इज 90 आवर्स. Okay, so the peak is 60 meter cube per second. ठीक है, peak is 60 meter cube per second. Occurs at 20 hours from the start of the storm. So ये है, this is your 20 hours. Okay, the area of the catchment is 300 square kilometer. The rainfall excess of the storm is. So एक DRH दिया हुआ है,
जिसका टाइम बेस इज 90 आवर्स. पीक is 60 meter cube per second occurring after 20 hour. Catchment area is given 300 square kilometer. So you have to calculate the rainfall excess of the storm. That means essentially हम लोगों को रन ऑफ कैलकुलेट करना है. ठीक है. सो व्हाट इज रन ऑफ? दिस इज द, ये जो डीआर सॉरी ये जो डीआरएच है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, द एरिया ऑफ द डीआरएच इज व्हाट? नथिंग बट रन ऑफ वॉल्यूम. What is runoff volume? Half into 60 into 90. Right? Half into 60 into 90. This is the runoff volume. So 90 hours into 3600. ठीक है. अब रन ऑफ वॉल्यूम को इफ आई डिवाइड द रन ऑफ वॉल्यूम बाय द कैचमेंट एरिया, so 300 into square kilometer, kilometer to meter, right? So if you divide this, then you will get the runoff depth. So instead of volume, it will be now runoff depth, and the value will be 3.24 centimeter. Option B. Okay. So with this, we'll conclude today's video. I hope कि आप लोगों को अच्छा लगा है solution. आज के जो वीडियो था उसमें we have solved 2 questions जो थोड़ा what I will say कि जो a little bit of complex था, थोड़ा बहुत, right? So I hope you have understood the concept behind the solution. If you have any doubt, then you are always welcome to address this. Do comment in the comment box, and definitely I will revert back to you. And if you are liking our video series, then do subscribe to our channel. Thank you so much.